Hey guys, I'm live again after a long time. Hope all of you are safe in your houses. I know this corona thing is pretty tough, and I'm sorry if you hear any disturbances in the background because I'm at home in home quarantine for 3 weeks, right? But life has to go on. कैसे हो सब आप लोग? I hope all of you are safe inside your houses. I know corona must have disturbed few businesses. Some of you might be facing issues. जो e-commerce वाले हैं, I feel your pain, right? Our e-com operations have also been shut down for 3 weeks. We would be bleeding a lot of money, maybe over a crore of revenues there. Even the e-com agency is standstill because अगर clients नहीं तो फिर क्या ही service देंगे, correct? Anyway, the point is, you know, अगर हमारे पास तीन हफ्ते हैं, we have got 3 weeks. We gotta make use of this time, right, guys? So today I'm just doing this live to share some of my experiences. Oh yeah, by the way, today Webforces has just turned 11 years old. ये हमारी 11वीं सालगिरह है. So it all started with micro niche blogs in 2005, I would say, when I was in second year of college. I was just exploring. Google AdSense just happened. Then I built, series of blogs after blogs after blogs. Hi Anita. Hello everyone. I hope this sound is clear. Please say yes if you can hear me properly. Awesome. All right. Hello everyone. Okay. So, uh, see, the landscape was very different in 2005, 6, up to, uh, May 2011. I would call it my golden innings when I was building blogs after blogs. They were all shitty 5-page blogs, and I'm not ashamed to accept that. I'm just gonna keep rotating the camera and keep showing you what kind of blogs did well, right? But before that, uh, three essentials that you would know and need for this session. One is keywords everywhere plugin, right? So you need that in order to get search volumes and stats. Okay, rotate the camera as in like you want it landscape. Is this better? Okay, is this better? All right. Okay, I was using landscape because I would have to keep switching. अभी ये घर का जुगाड़ है. So I don't have a studio setup here. So whenever I swap screens and I try to show you my Mac screen, it's gonna again be a little distorted, but never mind. Okay, so let me start with a classic example of a micro niche blog that made money for me. And also, I hope all of you have already seen the first episode of my micro niche blogging video. If you haven't, then I'm just gonna give you the link also. All right, very well. If you have already seen, that's great. So let me show you some examples. Okay, just to reiterate. Okay, thanks Nitin for watching all my videos. It gives me motivation to create more if you guys are watching. All right. So for starters, those who are very new to blogs and don't understand anything about it, Hindi mix करते रहूँगा Himanshu because there are people who also don't understand Hindi fluently. So मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करते रहूँगा, don't worry, right? So जो समझते नहीं है ये माइक्रोनिश ब्लॉग्स क्या होते हैं and those of you don't have any basic knowledge of blogging, basically what we have to do is find a low competition keyword, right? And I'm talking about SEO competition here. We are not talking about any paid marketing here. Look for low competition keywords, find a domain, we call it exact match domain, EMD. And at the end of the session, I will also give you a link to uh,
the blog post which has all these steps defined very well. And then tomorrow I will also be, should I use micro-niche domain same as the keyword? Yes, if the domain does not have any copyright issues in it. For example, I will give you some of the AndroidAuthority. I am sorry about the internet. Sorry for the disturbance. Yeah, my bad. The Wi-Fi just switched because there was a power cut, and it's back now. I hope you guys can hear again. Are you good? Yes, yes, of course. It will be live on my YouTube channel. So, and at the end, we will do an Ask AMA session, Ask Me Anything kind of a thing. Okay. Okay, I'll start answering these questions and then we'll start the session. How to get approval? Now, this is a tricky question. The basics that you have to keep in mind is this blog should not look like a thin content blog. Okay, if it is like a 3-4 page or like 10-page blog, which Google feels that it is creating only for the heck of getting approved on Google AdSense and spamming the world, then better luck next time. So आपको क्या करना पड़ेगा? You will have to have a very strong about us page. Okay, a good privacy policy, which is not a template copy paste, should make sense. You should have FTC disclosure also nowadays and GDPR if you can. Then there should be a contact form so that somebody can just reach out to you and test that this blog is real. And of course, you should have 15 to 20 posts. Now, I know there are exceptions. Some of you have got approvals even with like 10 posts, and I'm not debating that you can't. But if you really want to do it easily, then what you should do is have at least 15 to 20 posts. 5K ट्रैफिक फ्रॉम यूएसए बट एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा है. 10-12 बार अप्लाई किया. क्या निश है ये मौलिक आपकी? मौलिक, कैन यू हियर मी? आपकी क्या निश है ये? किस कैटेगरी का ब्लॉग है? इफ इट हैज 5K ट्रैफिक, इज दिस वायरल ट्रैफिक? ओके, हाउ टू मेक हाई डीए लिंक्स. ठीक है, फिर ये सेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत सारी चीजें बताने चालू कर दूंगा तो. बट एनीवे, टू आंसर योर क्वेश्चन, हाई डीए आपका डोमेन अथॉरिटी तब बढ़ेगी जब आप हायर डीए ब्लॉग से अपने ब्लॉग को लिंक करोगे. करेक्ट. नाउ at times you can get high PA links, which is like expired Tumblr. So if you know how to scrape expired Tumblrs with Ahref, then you can find some high PA. So DA is fixed for Tumblr, which is 99. The page authority, if you create a new Tumblr, for example, if I create omthoke.tumblr.com on page on first day, the page authority will be 1, PA will be 1, DA will be 99, obviously. I will answer one by one. Maybe get it. आदर्श, if DQR is 0 1 week में रैंक हो सकता है क्या? Yes, hopefully 2 to 3 weeks में हो सकता है. The whole point is you can first build a blog, and then once it has to get indexed in Google, and then once it is indexed, automatically it will go to page 1. Yes, I know. I will do that. I'm just doing a Q&A for 5 minutes, and after that I will start the session because other people are also coming live, and I had forgotten to post on Facebook and Instagram, so I'm just posting there also. In my last video, okay. Yes, the god of gaming. I don't know your real name. Basically, using PBNs is also a matter of common sense. अभी क्या होता है? Think of Google like a blind person, cannot see, can only hear, right? अभी अगर आपको इस, okay, हिमांशु, मैं आपका करते जाऊंगा 1 second. In this session, if you hear a lot of utensils in the background, you will also be confused. ये हो क्या रहा है? ओम क्या बोल रहा है? पीछे से आवाज बहुत आ रही है. Correct? So अगर ट्रांसमिशन क्लियर है तो आपको मैसेज क्लियर जाएगा. वैसे ही गूगल को मैसेज क्लियर जाना चाहिए. I'm sorry, I keep getting calls, so I just got digressed. Yes, let's do the questions one by one, guys. Let me open YouTube in my Mac also. I'm sorry, I'm doing this YouTube live after a while, so not very habituated to doing things from phone. But I mean, everything is in first time.
Let's see what's going on. I will start from the beginning, then we will start in sharp 4 minutes. Thanks, Himanshu. Thanks, Inderdeep. Thanks, Anita. Others. So I'm answering all of them one by one. If the question is if there is zero result after using double quote result, can I rank in 1 week? So you can rank in 1 week only if you get indexed in 1 week. If you get indexed in 1 week and if you are appearing in double quotes, then there is a possibility that you might get the actual ranking also. To answer that question, let me just turn the camera towards my Mac and show you. So for example, this is the keyword. Hmm. Okay, we are building one, so I'm just showing you live only, no problem. Lamborghini Urus prices. Lamborghini Urus prices. Volume is 74,000. CPC is 0.36. Okay, and DQR is only 653. So that is there are 653 competing pages. Now, if you take a look at the results here, you can see sites like Motor Trend, Autoblog, TrueCar. These are all big sites. Zigwheels, Driving, Autocar, KBB. Okay? But if you pay attention, this is Lamborghini Urus price. Of course, S is missing, but इतना major difference नहीं है. Again, 2019 Lamborghini Urus prices है. Exact match. New Lamborghini Urus SUV for sale. It does not have title match. Now let me remove the double quotes and see. If I remove the double quotes, of course this is sponsored results. इसको भूल जाते हैं अभी के लिए. Now this is my target featured snippet. Ranking for 0th position is one of the easy ways. So you need a TOC, table of content plugin. Also pay attention to what is getting indexed by Google easily. Something like that in your featured snippet will help. You can also include these sections as subheadings in your article. How much is it? 2019 Lamborghini Urus. How expensive is this? The blah blah blah. So these portions will also help you in ranking. Now let's identify a weak link here. Of course, Lamborghini.com is the main site, so we can't think of displacing them. There is this Yala Motor from UAE. I'm not sure if I'm looking at google.com. Yes, I am. So I'm not sure why UAE result is magically appearing here. It's not common, but yeah, chalta. Zigzags, car gurus. Okay, so it's gonna be a tough battle. I will have to select someone and I'm gonna look at this. I'm gonna go after this. Now let's see. Price. It is not a review page. Good news. Okay, so for what's new for model, it shows this. Also, good news is it's not updated for 2020. The 2020 is not ranking. So let me first Google and see. Yes, there is a 2020 model. So had the 2020 Lamborghini Urus prices page been ranking, then it would have been little difficult for me to displace them. This would be relatively easier to displace.
So I need better content than this. And then obviously I need more backlinks. And then these are some consumer reviews. So there's comparison with Land Rover and few other things. Review and the footer. Okay, so we know who is the competitor. We know what we have to do. Correct? So step one, are we clear guys? We have to find a low competition keyword which has lot of search volume as high as possible. Then you just Google the keyword in double quotes. This what you see about results is the DQR, double quote results. It should be as low as possible. So in simple words, it is a race of 8 people. If you see DQR is 8, this is a race of 653 people. So the moment you join the race, हाँ हिमांशु मैं बताऊंगा एक second please let me finish this session then I will answer your questions. Let's do this in one flow then I will answer all the questions. I'm here, I'm not going anywhere. Yeah, so lower the DQR, higher the search volume, better it is for us. Also CPC, ideally $1 honi chahiye, but it is not a big distinguishing factor in, I mean, decisive factor. Also, one thing that you must know is there must be at least one sponsored result. अगर आप ऐसे किसी पे ब्लॉग बनाते हैं, just give me one sec. I'm sorry about that. So, sorry, I work from home. Just give me a sec. Okay. Still clear and audible? Okay. Thanks. Okay. So where was I? Let me just turn back my screen. Sagar, regular videos shoot करेंगे यार. Actually, I didn't want to do these kind of videos because I know clarity नहीं होती. But then, since I'm home quarantined for 3 weeks, I don't have any other option. I'm gonna keep doing this. So कल से regularly videos मिलेंगी आपको. Bear with me if the quality is not so great, but ठीक है. Okay, so I'm just doing this one more time in the flow. You need a keywords everywhere extension plugin, Chrome plugin. You have to recharge it with $10 so that it becomes like this. It shows credits available. I bought it a while ago and still I have like 96,000 credits. Some of my team members also use it. Something. Yeah, okay. Sorry about that. I know camera lens is foggy. The background, you might even have बर्तन की आवाज सब चलता रहता है but yeah we'll do whatever best we can do in this. All right, I hope it's a little better now. Okay, so lesson number one, install keywords everywhere. There called WMS everywhere. It is free but the results are not as accurate as keywords everywhere, but if you don't want to invest money in the beginning you can use WMS everywhere also for free. So use whatever you want, then start checking volumes. You need a high search volume, low DQR keyword. CPC should be around $1, but thoda kam zyada chalega. And then there must be at least one sponsored result. If there is no sponsored result, means nobody is bidding for this. If there are no ads, then you will be able to rank the keyword, but you will make zero with Google AdSense because there are no advertisers on Google AdWords, correct? Okay, so हमको keyword मिल गया. The number 2 step that we have to do is identify whom we are going to outrank. In this case, I'm looking at the 0th position result.
So I have to do something better in terms of content, quality as well as quantity. Number three, I have to make a game plan. So I will use a tool like Ahref, where I will look at backlinks of the competitors and try to extract all of them. Again, Ahref, you can sign up for a free trial for 1 week for $7. Let me see if I can bring it up. Yeah, while I do that, so it's a 1 week trial, $7. Inderdeep, Inderdeep is asking why there is a need. Okay, so basically, if there is no ad appearing, right, that means there is nobody advertising on Google AdWords. And AdWords and Google AdSense are two sides of the same system. Google AdWords is for advertisers. Sometimes when we run ads for e-commerce, I am the advertiser. And when I'm working as a blogger, I'm the publisher. तो अगर कोई एडवर्टाइजर ही नहीं आ रहा है तो पब्लिशर को एड्स कहाँ से डिस्प्ले होंगे करेक्ट एंड इफ देर आर नो एड्स देर इज नो मनी सो आप रैंक करा लो कुछ भी कर लो बट देर इज नो पॉइंट God of Gaming is saying if I use .in extension, do I have better chances to rank in India? Yes. In terms of local SEO, yes. If you are looking at keywords like best places to visit in Bangalore or top 10 tourist spots of India, then yes. If you are looking at Lamborghini Urus prices, then probably no. Unless you are saying Lamborghini Urus prices in India. If the keyword has any local search terms in it, then yes. If not, then no. Doesn't make any difference. And I have also, as a disclaimer, I have also ranked .desi, .rocks, all kinds of weird extensions, and the domain extension doesn't make any difference. Yes, search ads नहीं है. You are right on that front, but the thing is, अगर search ads भी नहीं आ रहे हैं तो खाली display ads को spy करना एक अलग level का भसड़ है. तो फिर मैं वो recommend नहीं करता that you get into so much of spying. So if I'm not receiving any search ads, I'm assuming display ads will also be less, if not zero. So it's just a thumb rule I'm using. You are more than welcome to experiment. But yeah, what I've experienced is नहीं होता है वो मतलब कम ही होते हैं फिर उसमें आपको एड्स कम दिखेंगे योर फिल रेट विल बी बैड हाँ हिमांशु एक हेलो एवरीवन अगेन which is better okay I'm just answering Neeraj Javnani again how to get a website approved with AdSense it's tough to get AdSense these days on existing micro niche sites yes correct so अभी आपको small I will not use wrong words, but spammy, shitty, scammy looking made for AdSense thin content blogs from last 1 or 2 years. अब आप उस पे approve कराना चाहते हो तो you'll have to give it a revamp. So make sure design looks not like a real niche site, it looks like a good site. मतलब it looks like a content site, not a thin content site. That's the point. Second, about page आपका ठीक रहना चाहिए. Privacy policy ठीक होनी चाहिए उसमें FTC disclosure डाल दो GDPR डाल दो contact us working होना चाहिए and then at least 15 to 20 posts in one review let's say if you are going to review your own site आपको देख के लगता है हाँ भाई ये एक real site है इसमें user के benefit का कोई content है then a Google employee would also say yes but otherwise no. Okay, one sec. Please give some niche ideas. Okay, so niche ideas will be live on our keyword section of Bloggers World. Let me show you some of them. I will just tilt the screen again.
फॉर्म बैकलिंक वर्क करता है, फॉर्म या फोरम सागर? अगर फोरम की बात कर रहे हो तो यस अभी भी करता है। जैसे टीम बीएचपी इज अ ग्रेट प्लेस फॉर बिल्डिंग ऑटोमोटिव काइंड ऑफ बैकलिंक्स, एडमंड फोरम इज अ ग्रेट प्लेस, कार वाले कार देखो, कार गुरुज forums are a great place for building links for car blogs. So forums, yes, they do work, but पहले दिन जाके फटाफट स्पैम करना चालू नहीं कर सकते हो आप, you have to give it some time. ठीक है? Alright, so here you can see on www.bloggers.world you have this section called keyword idea. इसके अंदर आप जाएंगे तो बहुत सारे हैं। अभी the fun part, you know, funny part, March 9, 2017 I had done this post. नहीं हिमांशु, आई एम नॉट नेग्लेक्टिंग यू, लाइन से करेंगे यार, डोंट वरी, बिफोर द सेशन एंड्स आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, डोंट वरी। रोहित, दैट्स ट्रिकी वन फॉर अ माइक्रो निश, से नहीं होगा। वीडियो की क्वालिटी नहीं आ रही, आई नो यार, बट आई एम जस्ट शोइंग यू माय स्क्रीन व्हाट आई कैन डू। सो इफ यू सी मार्च 9 2017 को ये पोस्ट किया था, देन आई आल्सो डिड अ सेशन इन हैदराबाद, but nobody took action for this keyword. Now this keyword I have updated again. I'm surprised nobody took action, blah blah blah, and it is still searches 880, DQ 295, CPC. Search volume drop ho gaya, of course maybe some people didn't take action. It's still a good keyword for support post, not for a main domain. So you can come here. I'm going to start updating the keyword ID of the day daily. Before 12 o'clock midnight, you will find new keyword for today also. And then if you go and see that, you will see lot of keywords already live on that. Also, our marketplace is live in beta. So if you are a freelance provider, अगर आपने लोगो बनाए हैं, आपने कंटेंट लिखे हैं, सब आप मेरे को अब भेजना चालू कर सकते हो। My email ID is public, home@webforces. Put in subject line Bloggers World Marketplace, and please send your samples if you want to get empaneled. If you are someone looking for content or backlinks or PBN links, you can again email me. Link of the blog is bloggers.world, or if you just Google it also, Bloggers World, you will find it at number 1, Anmol. And yes, who was that? Somebody saying Neil Patel did a live case study on that. I'm not sure which study you're talking about, but yes, those links still work pretty much. All right, I'm just gonna scroll again one more time from the beginning. Better now, yes, Hindi language, bad internet. Sorry. Okay, so Maulik had asked that online survey niche है ना Maulik. So there are certain niches जिसके लिए easily Google AdSense approve नहीं करता है. I had a Bollywood blog and a Hollywood blog जिसपे बहुत सारे wallpapers and थोड़े से minute photos भी होते थे, because of that AdSense was not even displaying. In those days it was auto approved, but उसपे AdSense ad ही display नहीं होता है. तो बहुत सारी niches है जिसपे आप AdSense approval ले भी लोगे तो नहीं होगा. Yes, God of Gaming, if you write a post in advance, it might rank now. ठीक है, if you write a post for 2021, अभी से आप लिख के रख दोगे, it will rank now. But the moment Jan 1st 2021 comes and the real searches start, then it's gonna be the tricky situation. उस टाइम पे आपका कंटेंट सरवाइव कर पाएगा कि नहीं, नहीं पता, because you don't know the benchmark. तो उस जमाने में जो कॉम्पिटिटर्स कैसा कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, you will have to tweak your content next year and survive. So you will rank easily from next month till Jan, beginning of Jan or end of December. But जब real traffic start होगा आना, तब आप शायद rank hold कर पाओ या नहीं कर पाओ. It becomes a tricky thing. I hope that answers. Content link for Amazon affiliate niche जो जल्द से रैंक करे, ऐसा कुछ मैजिक फॉर्मूला तो नहीं है मेरे पास इन द मास्टरमाइंड.
There is no way to get AHREF at cheaper rates ethically आपको अपना credit card निकाल के pay करना पड़ता है भाई लोग. There is no other ethical option. I know there are people who do group buy. I'm not gonna say anything on camera about that. I reserve my comments. आपको जो सही लगता है आपकी लाइफ है आप करो. Yes, God of Gaming, if you update your content according to that, and also pay attention to what the competitors are doing during that time, you can still hold on to your rankings very well. How to rank micro because of thin content. Okay, so I had also given an example of, sorry, okay, questions keep coming, but I'm gonna stay focused because there are like three at a time I'm reading. Yeah, so I'd done a session on Uber customer care number, right? So I know there is no Uber customer care number. तो आप लिखोगे क्या? What can happen is you can write about your experience. Everybody has had a bad Uber experience, right? Only after that you start searching for Uber customer care. So let's say you left your number, you don't find anything, they have to go and click on contact support and mention the item missing, and then they will try to connect to driver. So what you can do is you can narrate your story, whole story, and you can empathize with the user, saying that I understand your frustration, I've been there, done that, and this is what I did. And unfortunately, there is no Uber customer. Are we back live? Guys, can you hear me? Sorry, I went off again for a few moments. Are we back live? Can you hear me? Hello. Say hi if you can hear me. I'm not sure what's wrong, but I don't seem to be live. Guys, can you hear me? Guys, can you hear me? Hello. Can you guys hear me? Say yes if you can, because I'm not able to read anything. Looks like some internet problem. Oops. Guys, it says I'm live. Can you hear me? Okay, cool. Sorry. Now, okay, cool. We are live again. Thanks and sorry about that small technical glitch. Okay, we are back. It says how to promote article writing service or find client. Okay, which do you use? Wow, we have tons of questions. Okay, I will try to pick up the important ones and answer them. Which hosting plan are you using currently? Different for different A2 and SiteGround, depending on usage. Then for small sites, I use host also. For VPNs, sorry, for VPS, there is Liquid Web, and then a couple of my friends also provide hosting. I use them. For Indian sites, I have Everdata. They're also very good and cheap, affordable. Cheap is not the right term. हाँ हिमांशु जी बताइए. मॉड एपी की वेबसाइट पर एब्सेंस
अप्रूवल यार बहुत मुश्किल से मिलता है, उसके लिए थोड़ा सा गूगल देवता से प्रे करना पड़ता है। सी ये चीज कर सकते हो अगर तुम्हारा होम पेज अभी स्टैटिक है। सो व्हाट यू कैन डू इज पब्लिश 8 to पोस्ट्स रिलेटेड टू गेमिंग, नॉट रिलेटेड टू एपीके। ठीक है, अपने होम पेज को थोड़ा सा डिफरेंट दिखाओ। एक बार अप्रूवल मिल जाए उसके बाद तुम चेंज कर सकते हो उसको वापस स्टैटिक मॉड एपीके वाले के लिए। सो यू विल हैव टू मेक द ब्लॉग लुक लाइक इट्स अ गेमिंग ब्लॉग। ठीक है, नॉट गैम्बलिंग, गेमिंग ब्लॉग। तो थोड़े गेमिंग रिव्यूज और ये वो कोई भी डाउनलोड वाला पोस्ट पहले मत लगाओ। जब एडसेंस अप्रूवल मिल जाए उसके बाद अपने शेडी चीजें करना उसके ऊपर। That's the only way I know of. And I'm not actively doing APK vlogs right now, so disclaimer. This is little outdated, like 3-4 months outdated information, but अभी एक बार मैं टेस्ट करके देखूंगा। In these 19 days I'm gonna test. So अभी आज एक APK में अप्रूवल लगा के देखता हूँ। If I get it, then I'll share it with you. एड लिमिट का कोई सोल्यूशन, नीरज कौन से एड लिमिट की बात कर रहे हो आप? एड सर्विंग डिसेबल्ड वाला मतलब, या फिल रेट खराब है? अप्रूव होने के बाद ऐड लिमिटेशन तभी आएगा व्हेन द कंटेंट इज ऑब्जेक्शनेबल। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लेट्स से यू आर पोस्टिंग these bikini wallpapers kind of posts, then उस पर एड सर्विंग लिमिट हो जाती है। यूजली अगर आप गेमिंग ब्लॉग अप्रूव करवाते उस पे एपीके चला रहे हो, until you are not hosting that pirate or any थर्ड पार्टी थिंग ऑन योर ओन ब्लॉग, अगर आप सिर्फ लिंक दे रहे हो तो यूजली प्रॉब्लम नहीं होती। वसड़ तब होती है जब आप अपने ब्लॉग पे खुद उसको होस्ट करना चालू कर देते हो, विच इज अगेंस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। सी मेथड ऑफ फाइंडिंग क्वालिटी एक्सपायर्ड डोमेन्स, यार इसके लिए हमको अलग सेशन करना पड़ेगा। आई विल डू दैट वन बाय वन। एडसेंस में कवरेज डाउन है, ये फिल रेट इज बैड, यू नो द होल कोरोना वायरस थिंग गोइंग ऑन। सो अगर एडवर्टाइजर नहीं है तो ऑब्वियसली फिल रेट्स आर बैड। If fill rates are bad, then obviously earnings are bad. साइड ग्राउंड तो आप साइड ग्राउंड सपोर्ट से बात कर लो, टेल देम दे विल अलाउ यू टू डू पेपैल आल्सो। इंडेक्स ऑफ रैंकिंग बिंग सर्च, नहीं यार पार्थ, अभी मेरे को ये सब वापस रीस्टार्ट करना है। सो यू नो, और जो ई कॉमर्स के लिए टिप्स मांग रहा है तो उसमें अभी तो ई कॉम तो पूरा ही बंद है भाई। तो मैं क्या ही ज्ञान दूंगा, कोई मंत्रा नहीं है मेरे पास। 21 days of lockdown, we are gonna bleed almost crore and half rupees of revenues in this 1 month or so। और उसकी भी कोई उम्मीद नहीं है कि मतलब अप्रैल 15 को एकदम बूम जाएगा मार्केट। पीपल विल आल्सो बी स्केप्टिकल, डिलीवरीज धीरे धीरे चलेंगी। डिलीवरी वाले लोग भी साले जो अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऑर्डर्स उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, तो अगर हमारे दिन के 1000-2000 ऑर्डर्स हैं उसके लिए इतने नहीं होते हैं। Is the coronavirus same as change in Google that happened for you? Yeah, pretty much. अभी कोरोना लगवा लोगों को उस दिन उस टाइम पे पूरी दुनिया को नहीं लगा था, सिर्फ मेरे को लगा था। बड़ा दर्द हुआ था दिल में। इट वाज May 18, 2011। हमारे 367 ब्लॉग्स होते थे। ऑल 7 यूज्ड टू बी ऑन बंचेस ऑफ 50 ऑन 7 VPS। सारे के सारे गूगल तरह जो थे अलग शेयर्ड होस्टिंग पे थे, गलती से बच गए। सागर मूवी डाउनलोडिंग से कैसे अर्न करें यार, ये वाली निश पे मैं काम नहीं करता सागर। हिमांशु, थोड़ा सा दूसरे लोगों को भी चांस देते हैं हिमांशु, मैं सारे आंसर कर लेता हूँ फिर उसके बाद देखता हूँ। 10K पेज व्यूज बट एडसेंस डिसअप्रूव्ड, हाउ कैन आई गेट अप्रूव्ड? कौन सा निश है अगेन हिमांशु आपका? ओके, सो बेसिक्स ऑफ कंटेंट कोई पूछ रहा है ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए। तो जैसे मैंने आपको एडवर्ड वाला दिखाया था पोस्ट, इन दैट माय एम वुड बी टू do better than the competitor in terms of
क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। तो अगर उसका 1000 वर्ड्स का पोस्ट है, आई विल ट्राई टू मेक श्योर आई डू अ पिलर पोस्ट ऑफ लेट्स से 1200 to 1500 और इवन 2000 वर्ड्स। सागर पीबीएन कैसे वर्क करता है? पीबीएन इज लाइक you can consider PBN to be either private blog network or a public blog network. For me, both are one and the same because हम सारे ब्लॉग्स को एक ही प्रोसेस से बिल्ड करते हैं। वो कैसे वर्क करता है, मतलब इट इज बेसिकली यू आर गिविंग बैकलिंक फ्रॉम योर ओन ब्लॉग टू अनदर ब्लॉग ऑफ योर्स। सो एथिकली तो ये सही चीज़ नहीं है। गूगल बोलता है साले तुम लोग गेम कर रहे हो सिस्टम को, यू आर ट्राइंग टू मे फूल अस, सो हियर इज द पेनल्टी, बैन कर दो उसको। That's how it works. But if you are smart enough, then you don't need to do that directly. What you do is धीरे धीरे करके आप अपने अलग अलग ब्लॉग्स को लिंक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू हैव गॉट 10 PBNs and you have got 3 money sites. So from PBN number 1 you link to your Quora reply, Quora replies links to your site. Then Google cannot penalize Quora because Quora has got millions of views and tons of backlinks. सेकेंड टाइम आप क्या करो, पीबीएन नंबर 2 से अपने कोई एक इनर पोस्ट को लिंक करो। फिर पीबीएन नंबर 3 से अपने किसी वेब 2.0 जैसे टम्बलर को लिंक करो, टम्बलर से अपने ब्लॉग को लिंक करो। ऐसा एक आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सो देन गूगल वोंट बी एबल टू इजीली डिटेक्ट व्हेनेवर यू हैव पैटर्न्स, दे कैन इजीली डिटेक्ट। निखिल पूछ रहे हैं ना, मंथली 30 के व्यूज आते हैं सोशल मीडिया से बट नो अर्निंग, इसका कुछ क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। व्हाई डोंट यू थिंक्स सोशल मीडिया का ट्रैफिक किस निश में है आपका, ये बताओ पहले, देन आई विल गिव यू अ स्पेसिफिक आंसर। अबाउट साइलो स्ट्रक्चर, एक यार ये वाला सेशन मेरे को मैक्स से करना पड़ेगा। टुडे आई वाज डूइंग मोर ऑफ ओवरव्यू ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग इन गूगल एडसेंस से कैसे होता है। और आपके Q&A, मतलब बहुत सारे लोग मुझे तब से बोल रहे हैं कि एक बार लाइव करो और आंसर करो। ओके, फेस्टिवल निश के लिए है तो फिर वो ऑफर्स प्रमोट कर सकते हो निखिल, प्रमोशनल थिंग्स, टी शर्ट बेच सकते हो, उसके ऊपर रिचार्ज ऑफर्स रन कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड ऑफर्स रन कर सकते हो, शॉपिंग रिलेटेड चीजें रन कर सकते हो। अगर एडसेंस नहीं चल रहा तो फिर उस पर एफिलिएट ऑफर्स लगा सकते हो। एडवाइजेबल टू वर्क ऑन इमेज वेबसाइट लिरिक्स जॉब साइट इवन इन 2020? यस, जॉब साइट तो अभी भी चलती है, फॉर श्योर चलती है। बाकी अदर्स आई डोंट नो, मैंने अभी टेस्ट नहीं किए हैं। फेसबुक मार्केटिंग के जल्दी सीखने का तरीका, यार जल्दी तो मेरे को नहीं आता। आई टुक लॉट ऑफ टाइम एंड आई एम स्टिल लर्निंग। How many blogs are usually there in a typical PBN? Blog post, you mean? Ish 736? Yes, typically it should look like a real blog. So if it is a real blog, it has to be 15 to 20 posts, minimum of 10 posts, even on a PBN. पिलर पेजेस के बारे में बताइए। ओके, बेसिकली पिलर पोस्ट और पिलर पेजेस आर वेरी वेरी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। फॉर एग्जांपल 2000 words on top 10 places to visit in Bangalore, or 3000 words on top 20 cars of 2020, or a 4000 worder guide which I'm going to release today on top 20 ways of making money in 2020. हाँ जी, हिंदी में एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। अभी एक ही लाइव Q&A जैसा हो गया है बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट लाइक 100+ पीपल आस्किंग क्वेश्चंस। सो अगर मैं सेशन करते रहा और लोग के सवाल आंसर नहीं हो तो उससे ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है कि लोगों के सवाल ही पहले आंसर कर देता हूँ। देन आई विल डू अ crisp 10 minute and we will end this because it's already 45 minutes and I have commitments after 5 o'clock. Okay, let's say got copyright warning from Facebook. WhatsApp status site के कोई फ्यूचर नहीं है भाई, बहुत डेंजरस चीज है। But again, what I can give you as a small tip is don't include WhatsApp as a term in your domain name. So like I give you an example of Uber customer care. So instead of taking the domain as Uber customer care number.com, you can take it as customer care number.info and create a subdomain called uber.customercare number.info.
इसमें कुछ इनेबल करने वाली बात ही नहीं है। अफार, यू हैव रिटन 3000 वर्ड्स ऑफ 30 लिस्ट, ये दैट itself is a pillar post. It is just a term for a regular post to be classified as a pillar post. उसका कोई ऐसा वर्डप्रेस में कैटेगरी नहीं होती जिसमें आप उसको पिलर पोस्ट बोलो। इंदिरा रंगारी, भाई मेक अ डिटेल वीडियो ऑन माइक्रो निश डोमेन रजिस्ट्रेशन इन हिंदी। ओके, मैं वो भी बनाऊंगा। हिंदी सीरीज भी यार हमने शूट की थी, लेकिन आपने देखा होगा फर्स्ट 2 वीडियोस में जैसे एको बहुत था, तो उसके कारण मैंने बहुत सारे रिलीज नहीं किए। अब अगर कुछ नहीं होगा तो मैं उनको रिलीज करना चालू कर दूंगा। शुड आई यूज पीवीएन और नॉट फॉर रैंकिंग? यस यू मे, फॉर श्योर। ओके, other questions? Okay, Rizwan is asking content, थोड़ा बताइए मेन कीवर्ड को कितने दफा यूज करना है। ओके, तो आपको क्या करना है, थंब in the heading, in the title, it should appear as it is. In the first 30 words, it should appear as it is. उसके बाद एटलीस्ट इंट्रो पैरा में एक बार एज इट इज, एटलीस्ट एक सब हेडिंग में एज इट इज, और एक बार कंक्लूजन में। तो अगर आपका 500 वर्ड का आर्टिकल है तो 4 से 5 बार होता है, तो बढ़िया है। प्रतीक शिंदे दारू पीते हो क्या? भाई हाँ, एकदम बिंदास पीते हैं। बहुत सारे फोटोज देखे होगी आपने। और उसको मैसेज को रिट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दिल पे कुछ भी बुरा नहीं लेता। बिंदास पूछो जो पूछना है। दीपक कुमार, इज टी शर्ट गुड टू सेल इन इंडिया? देयर आर मेनी कंपनीज, यस इट इज स्टिल सेलिंग। बिल्कुल कर सकते हो, बट ओनली प्रॉब्लम है कि अभी डिलीवरी नहीं होगी, तो अभी 3 हफ्ता चिल मारो, कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर डोमेन नेम एंड टारगेट कीवर्ड, एक सेकंड क्या है, हाँ, रैंक मैथ गिव्स यू फीचर टू एनेबल पिलर कंटेंट, वो तो अलग बात है, वो आप प्लगइन स्पेसिफिक बात कर रहे हो। यस यू कैन डू दैट, बट मैं एक जेनरिक टर्म्स में बात कर रहा था। मैं रैंक मैथ उतना यूज नहीं किया हूँ यार, एक बार टेस्ट करके बताऊंगा आपको। अगर डोमेन नेम एंड टारगेट कीवर्ड सेम हो तो एचएफ में रैंक के लिए कंपटीशन, समझ नहीं पा रहा हूँ निखिल, थोड़ा सा बेटर फेस करोगे अपना क्वेश्चन? अगर डोमेन नेम एंड टारगेट कीवर्ड सेम हो, मतलब ईएमडी हो, तो एचएफ में रैंक करने का क्या मतलब है, समझा नहीं है। 6 मंथ्स में एडवांस लेवल पे फेसबुक मार्केटिंग सीखना है, बेस्ट वे बताओ सर। बस आप अपने आप करते रहो सर, और कुछ नहीं कर सकते। बेस्ट एक्सपीरियंस इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आई डोंट हैव एनी मैजिक फार्मूला। मूवी डाउनलोडिंग से कैसे रन करें? नहीं यार सागर, मुझे ये नहीं पता, मैंने कभी नहीं किया, एंड थोड़े क्वेश्चनेबल निशेज हैं वो, उसके अलग। फसूड़ी है। Give me one moment guys, I will just, okay, the problem is ऊपर के क्वेश्चन छोड़ चुके हैं। इंग्लिश कैसे बोलना सीखें? ओके, तो मैं बचपन में 8वीं तक बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलना जानता। पहली बार एक बड़ी स्कूल में पहुंच, राइट, सो कुछ नहीं यार, अपने आप से पहले बात करना करने लगो, नॉवेल्स पढ़ो, रीड डेली, कोशिश करो, थोड़ा सा लिखो, लिखते जाओ, अपने आप फील आने लगेगी, आप सीख जाओगे। ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे ड्राइविंग सीखते हैं ना, तो डर लगता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, बट इफ़ यू डोंट केयर तो बिल्कुल हो सकता है। अगर आप सोचोगे नहीं होगा, अच्छे माइंडसेट से चलोगे, तो नहीं होगा। अफिलिएट मार्केटिंग एड्स बेटर है या ब्लॉगिंग? भाई ब्लॉगिंग इज जस्ट अ टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर बिल्डिंग अ वेबसाइट। अब इस वेबसाइट से आप एडसेंस से पैसे कमाओ या बैनर एड से कमाओ या किसी से भी कमाओ, वो आपके ऊपर है। तो अगर उसके थ्रू अगर आप अफिलिएट लिंक्स लगाते हो, उन लिंक से सेल होता है और आपको पैसे मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप सिर्फ गूगल एडसेंस का एड कोड लगा देते हो और वेट करते हो कि आपको उससे पैसे मिलेंगे, तो दैट इज कॉल्ड गूगल एडसेंस मोनेटाइजेशन। ब्लॉग सेम ही होता है, ब्लॉगिंग और अफिलिएट मार्केटिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स जस्ट टेक्निकल jargon that people use। हाँ, मीडिया बाइंग इज डिफरेंट, अगर आप एड्स रन करते हो दैट इज डिफरेंट।
So you should be asking media buying versus SEO. सागर जैसे बैकलिंक से रैंक पुश होता है, बिल्कुल होता है, तभी तो हम बनाते हैं. कैन आई कॉपी सम कंटेंट ऑफ अ पोस्ट? यस यू कैन टैक्टफुली. और अगर आपको कुछ कॉपी करना होगा तो वर्डप्रेस में ऑप्शन होता है कोट करने का. तो इफ यू कोट सम पोर्शन देन यूजली वो उसको कॉपीज के इश्यूज नहीं आते. लेकिन मेजर पोर्शन अगर आपका कॉपीड है तो फिर प्रॉब्लम है. ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट जितने थे ऊपर विजिबल क्वेश्चंस वो मैंने आंसर कर दिए. तो अभी हम, यस हिमांशु, वेब 2.0 बिल्कुल वर्क करता है. अभी भी हम रिलीजियसली डेली बहुत सारे लिंक्स बनाते हैं और वो काफ़ी काम आते हैं हमारे. सो एंड डोमेन नेम एंड टारगेट कीवर्ड सेम होते हैं. निखिल, मैंने आपको बोला यार उसको थोड़ा सा बेटर फ्रेज करो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ. एज रफ में रैंक का क्या मतलब हुआ? हाई कंपटीशन है तो रैंक करेगा क्या? आप एक बार उसको डबल कोट्स में देखो. आपके डबल कोट्स रिजल्ट अगर हजारों में लाखों में है तो फिर थोड़ा टफ होगा. मैं यूजली किसी भी एसईओ टूल के कंपटीशन एस्पेक्ट को नहीं कंसिडर करता हूँ. वे शुड बी क्रिएट बैकलिंक्स. ब्लॉगर्स डॉट वर्ल्ड पे गाइड उस पर पढ़िए आप. दीपक आपको दिखेंगे बहुत सारे तरीके. वेब 2.0 ब्लॉग कमेंट्स, वेरियस वेज, बेसिक्स. अच्छा, ओके गाइस. हाउ टू इंडेक्स लैक्स ऑफ यूआरएल्स इंडस्ट्री. हाँ प्रतीक, शायद आपने एक अलग से भी मेरे को ये पूछा था. लैक्स ऑफ यूआरएल वाले मैंने कभी किया नहीं, तो बैड एडवाइस नहीं देना चाहिए. हाँ, फॉर ऑफ पेज एसईओ सबके ऑफ, मतलब ऐसे जो आज मैं कैजुअल लाइव कर रहा हूँ ऐसे तो मैं हर चीज़ का कर सकता हूँ. एंड आई थिंक मेरे को वही करना पड़ेगा बिकॉज आई स्टार्टेड शूटिंग प्रोफेशनल वीडियोस. आई इवन हायर्ड अ वीडियोग्राफर. हमने स्टूडियो शूट किए और बस बना ही रहे थे और ये कोरोना हो गया. तो अभी 1 महीने का शटडाउन हो गया. एक फ्रीलांसिंग का वीडियो हमने शूट कर लिया, प्रॉपरली एडिट भी हो गया. बस मेरे को एक उसका सपोर्टिंग ब्लॉग पोस्ट खत्म करके उसको रिलीज करना है, तो मैं इस वीकेंड पक्का करूंगा वाला है. Okay, guys, it's 5 o'clock, so let's quickly sum up to start micro niche blogging and to answer basic questions. Does it work in 2020? Yes, it definitely works in 2020. Am I making a lot of money with that right now? A lot, no. But can I make? I think I feel yes. अभी इस 20 दिन में मैं अपने पुराने 400 से 500 ब्लॉग को रिवाइव करने वाला हूँ. और आई एम होपिंग दैट आई विल बी एबल टू जनरेट सम सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फ्रॉम दैट. आई नो बहुत सारे लोग मुझ पे हंस रहे हैं. एंड आई डोंट माइंड चैलेंजेस. आई विल डू इट. हो सकता है $1000 ही बने, कोई बात नहीं. इज इंसुलिन अ गुड निश आइडिया? येस, इफ यू कैन फाइंड लो कंपटीशन कीवर्ड, व्हाई नॉट. हाउ टू इंडेक्स फास्ट फॉर वायरल कंटेंट? न्यूज कंटेंट को इंडेक्स कराने के लिए ओके बहुत सारे आरएसएस फीड्स होते हैं. pingomatic.com एक सर्विस है, वहाँ पे जाके आप सबमिट कर सकते हैं और पॉपुलर आरएसएस फीड्स अपने वर्डप्रेस में प्रोग्राम कर दो, उस पे पिंग भेजते रहो. ओके, आई एम जस्ट गोना टर्न ऑफ comment for 2-3 minutes so that I can talk peacefully. क्योंकि मैं पिछले 40 मिनट से कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और it's quite distracting. Yeah. So to summarize, from 2005 I started building. ठीक है, स्टार्टिंग में it took me about 11 months to get my first $108. Then it took me about 1 year to get to $1,000 per month. Then took me another 2 years to get to like $100,000 per month. जब अच्छी चीज़ें होती है तो गूगल देवता नाराज़ हो जाते हैं. मे 2011 फटका पड़ा, 93% सब उड़ गया. आई पिवटेड द प्रोसेस एज अ डेवलपमेंट एंड ब्रांडिंग एजेंसी. आई डिड अदर थिंग्स. आई लर्न एफिलिएट मार्केटिंग. उसमें मैंने स्केल किया, उसमें फिर फटका लगा. लार्जर प्राइस डिफॉल्टेड माई 6 फिगर पेमेंट. देन आई स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग इनटू ई-कॉमर्स. उसमें अच्छा किया, उसमें मिलियन रेवेन्यूज किया, उसमें पैसा लूज किया, पैसा बनाया, फिर पैसा लूज किया. अभी कोरोना के चलते फिर से पैसा लूज कर रहा हूँ. Okay, so it's a constant battle. The whole purpose of doing this session was also, of course, to answer some of your Q&As, to answer your questions, and also show you कि micro niche blog से पैसा बन सकता है.
अब जस्ट टू शो यू सम एग्जांपल्स, आप लोगों ने मेरा ये वीडियो तो देखा ही होगा, तो इसमें अगर आप सिर्फ कैप्शन देखोगे, एक सेकंड लेट मी जस्ट, वो मेरा एक एडसेंस अकाउंट है, अभी मैं लाइव में खोलना नहीं चाहता क्योंकि ये वाले मैक पे अभी नया नया बना हुआ एडसेंस अकाउंट है जिसको मैं छेड़ांगे। इफ यू सी दिस, मेरा जो वीडियो है हाउ टू मेक मनी विद ब्लॉगर्स वर्ल्ड एपिसोड 1, तो इसमें मेरा जो अकाउंट है इसमें ऑलमोस्ट $37,000 के रेवेन्यूज थे, जो जिस जमाने में ब्लॉगिंग से बहुत पैसे बनते थे हमारे, और ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे अकाउंट्स होते थे। तो एक अकाउंट में कभी भी $7-8 हज़ार से ज़्यादा लेते नहीं थे, बिकॉज ऑब्वियसली गूगल बिकम्स क्वाइट स्ट्रिक्ट ऑन अकाउंट्स डूइंग मोर देन $10,000, उनके रेगुलर रिव्यूज होते हैं। तो हम क्या करते थे, $6,000 वाले मल्टीपल अकाउंट्स रन करते थे। बट ऑफकोर्स हम बच्चे थे, बेवकूफ़ थे, तो कॉपीराइट टर्म्स यूज़ किए, डोमेन्स में उस पर CMD नोटिस आए, और बहुत सारे साइट्स को हमने इंटरलिंक करके रखा हुआ था, तो एक साथ डूब गए। फिर समझ में आया कि ब्लॉग्स को अलग अलग, फिर धीरे 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 मैंने क्लाइंट्स के लिए SEO किया, तो मुझे समझ में आया कि लो कंपटीशन कीवर्ड्स क्या बला होती है, कैसे उनको सिलेक्ट करना होता है, और कैसे हम उसको रैंक करा के पैसे कमा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले बेसिक्स ये समझना है कि आपको लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, उसके लिए कंटेंट लिखना है, उसके बाद उसको पब्लिश करना है, एक अच्छी वर्डप्रेस की थीम लगानी है, गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है, फिर बैकलिंक्स बिल्ड करने हैं, तो इसको रैंक कराने के लिए अगर आपका, इफ़ यू आर रनिंग अ रेस ऑफ जस्ट 5 पीपल, यू विल बी 6th ऑटोमेटिकली, मतलब आप पेज 1 पे पहुंच जाएंगे। सो इफ यू कैन फाइंड अ कीवर्ड विच हैज़ DQR of less than 10, it's just matter of getting it indexed, and if you get it indexed, uh, getting rankings would not be very difficult. You can go to bloggers.world and read some guides. I'm also gonna update keyword idea of the day today as promised. And now let me enable the chat. How to rank number 1 from 20, 30, 40th position. Rajwardhan, what keyword specific, मतलब कीवर्ड के स्पेसिफिक आंसर दे पाऊंगा तो बेटर है, नहीं तो ये तो हवाई सवाल है। ज़्यादा बैकलिंक्स बनाओ, अपने कंटेंट को रिव्यू करो, ऐसे जेनरिक रिप्लाईज में लेना नहीं चाहता जो सारे वहाँ ज्ञानी गुरुज देते रहते हैं। एफिलिएट लिंक शेयर कहाँ करें? अपने ब्लॉग्स पे पब्लिश करोगे भाई। टेक्नो शैम, सोशल मीडिया में फेस दिखाने में डर लगता है, कोई बात नहीं, मत दिखाओ, अपना स्क्रीन दिखाओ, स्क्रीन पे रिकॉर्ड करो, आवाज़ सुनाने में तो डर लगने लगता है ना, क्या दिक्कत है। थैंक्स अनीता। हमजा, ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग बेसिकली ये होता है कि आप चाइना का कोई माल US में किसी को डिलीवर कर रहे हो बाई शोइंग हिम फेसबुक एड एंड देन फुलफिलिंग इट बाय अली एक्सप्रेस और सम चाइनीज वेंडर। बट okay guys, it's already been 59 minutes 20 59 minutes 22 seconds. How many sites can we have safely on one single IP? Well, that's a tricky question, Anita. I had like 50 on my VPS and all of them died together, so I would not say more than 2 3. Yes, I will. I have made a video, I will release it. How to rank an affiliate site around a software product. You have to find again low competition keyword, उसको रैंक कराओ, और उसके बाद Praveen, some niches you will suggest. Yeah, niche में कोई नहीं होता है, according to your choice. If you are passionate about Mahindi design, you can find keywords related to that. If you like soccer, you can still find low DQR keywords related to that. Personally, I love cars, so most of my examples are around cars, and I've done a lot of those posts, and I know how to find them. इसलिए मेरे लिए cars और bikes easy है, but you don't have to do that. How to search low competition keyword? सर मेरा वीडियो देख लो पहला वाला, उसमें आपको सारे बेसिक्स मिल जाएंगे। And Anita, yes, it is always good to keep your main site separate from experimental ones, because in case they get banned accidentally, it's a big issue.
Okay, so to conclude things, can you make money with Google AdSense in 2020? Yes. What do you need? You need a low competition keyword and at least 5 to 6 supporting keywords. Once you have a low competition keyword, that all that you have to do is register a domain, exact match domain EMD, which is same. For example, whomakescadillac.com. If you have not seen my example, please also go to my YouTube channel and see my live case study of Who Makes Cadillac, episode 2, which I had done in Hyderabad. It shows you an example of what this session was about. And if you want to see a second, how that used to look like, way back, archive. यस यार, आज के वीडियो में डिस्टर्बेंसेस हैं, क्या करें, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कोरोना ना ना ना. So I'm just tilting it one final time. In case you don't know, there is something called web.archive.org. This is the Wayback Machine. You can see how a site looked somewhere earlier. So I'm clicking at April 22, 2017. This is how my whomakescadillac.com used to look like. You can click on any screenshot and see. Sorry about that again. Internet is not so great today. But ये लाइव सेशन प्लान कर लिया था, तो अब now to hell with it. करना है तो करना है. Okay. Who makes Cadillac? List of Cadillac models. Then images are missing because they don't host images, so you can see एकदम सिंपल सा wiki style पेज था. कोई ऐसे 2-3 हजार वर्ड्स भी नहीं थे. It's like less than 1,000 words. There was this escalate concept car and very few, like 4 or 5 pages. और ये ब्लॉग दिन का $1 consistently बनाता था. All of you know there was a time when I used to tell people to make army of blogs to make $1 per day per blog and have like hundreds or thousands of them. वो आज के 2020 में हो नहीं सकता है. You need to probably focus on 10, 20 or 30 blogs at a time. What I'm trying to do right now is again little stupid or extravagant, but let's see how that goes. Okay. So any final questions until next time? Yes, Cadillac idea is still viable. The only thing that you should not do is have Cadillac in the domain name. So you will have to make, like I gave an example, let's say Cadillac CTS prices है, तो you will have to do ctsprices.com and then create a subdomain called cadillac.ctsprices.com. Okay, सवाल खत्म ही नहीं हो रहे हैं. Adding custom domain on Blogger. How much time it takes to show? Usually 12 hours maximum. What kind of post people write for APK? वो तो बकवास ही लिखते हैं यार, उसका कोई माई बाप नहीं है. But usually what you should do is try to write something which add some value to user. It could be your own experience. Ki I was trying to download this mod APK, then this happened, then that happened. I went to this place, वहाँ पे नहीं मिला, and finally I found it here. So there you go. Click on this and you will have the APK. Something like that you can do and talk about some other things. 301 redirection से ranking में फर्क पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है. So there is another small thing that you can do. Let's say you have a big site and you want to rank it for specific target keywords. What you do is create, let's say bloggers.world है, slash मैंने keyword1 लिखा, एक पोस्ट मैंने उसके अराउंड बना दिया. अब मैं keyword1.com को अलग से रजिस्टर करता हूँ, उसको रैंक करवाता हूँ. एक बार वो रैंक हो गया तो उसको 301 रिडायरेक्ट कर दूंगा bloggers.world/keyword1 पे, तो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ पास हो जाएगा, लिंक जूस पास हो जाएगा, रैंकिंग पास हो जाएगी.
क्लिक बैंक के सेल्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? डॉलर बॉक्स नहीं यार, मैं क्लिक बैंक नहीं प्रमोट करता हूँ, बट आई एम अज्यूमिंग दैट इट शुड बी सिमिलर, सो you can run ads for those. Media buying is the best strategy for conversions. Some hosting site which does not require international. गॉड ऑफ गेमिंग, आप मेरे को एक प्राइस पर्सनल मैसेज कर दो इंस्टाग्राम में, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ. Okay, the session has lasted much longer. Since we are allowed only one same AdSense account, Anita, yes, once you have approval on 20 different blogs also, you can keep them under one. Google AdSense allows you to have up to 200 URL channels. So technically you can host even 200 sites on one AdSense account, but I would not again recommend it because with so much of hard work, you would be getting them approved. So don't put more than 15, 20 on one single place. Okay. Okay, guys, it's been more than an hour. Thank you so much for joining me, and I will give you the separate video on freelancing. Dollar Box में कोई course नहीं बना रहा हूँ. I'm just creating video series to help all of you. I will not have any courses. I will not be selling any courses. All I'm trying to do is help people for free, and that's the goal, and I will continue doing that. So until next time, keep posting your queries below, and of course after this session is over you can still drop in your comments. I will reply to all of them. हाँ जी हमजा शाह, मैं कोशिश करूंगा सबको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए. अभी मेरी लगी पड़ी है. We have to fight a lot of things in these 20 days, but yes, fingers crossed, and hopefully we'll do good. AdSense के लिए अप्लाई करूँ after 31st? Yes, 28 days चलेगा, no problem. Okay, guys, keep posting your questions. I will keep answering them. Bye bye. Thank you. Insta ID is Om Thoke. I am Om Thoke everywhere. OMTHOKE. You can Google me. You will find my Insta, Facebook, YouTube, everything. क्या हुआ नितिन? How did you grow your company? Okay, मैं आपको comments में दे दूंगा because this is way too long now. मैं बहुत अच्छा हूँ, धन्यवाद. जिस लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ. I'm not. One sec. ओ हाँ यार, हमारी तो लगी पड़ी है, क्या कर सकते हैं. मेरी जर्नी आप देख सकते हैं सतीश कुशवाहा और अमित मिश्रा के वीडियो पे मैंने शेयर की थी. बार बार सेम स्टोरी सुना के लोगों को बोर नहीं करना चाहता हूँ, बट आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं. ओके गाइस, सी यू, थैंक यू, बाय बाय.